Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and once again I'm here, your teacher Varda. We met in the previous lesson और आज मैं फिर से आ गई. Before starting the lesson, I am going to tell a little bit information to your teacher और उसके बाद मैं एक और चीज़ भी बताऊंगी और फिर हम सब मिलके बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे. Okay? So let's look at the screen. After the lesson, the child is expected to learn to recognize the letters with their initial sound and then use the correct pronunciation, and at the end recognize and differentiate between sounds in the environment. So these three ELOs, the expected learning outcomes for the teacher. Moreover, I want to tell you that the activities or the things, the PPTs, the lesson plan that we are going to do in this lesson और जिसे जो हम use करके पढ़ाएंगे, all these things are available in the description box. You can go there, download them and take help from them. वो आपको आपके lesson के implementation में बहुत help करेंगी. So now back to the lesson, kids. How are you? I hope that you all are doing really fine, and I really miss you a lot. Now what we are going to do, first of all, जैसा कि मैंने पिछले लेसन में एंड पे कहा था कि I am going to ask you about your homework. आपको याद है कि हमने पिछले लेसन में एक स्टोरी पढ़ी थी और उस स्टोरी के बाद हमने क्या किया था? मैंने आपसे कहा, मैंने आपको लेसन का मॉरल बताया था और मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स बताए थे जिनका सेम साउंड था. तो कैन यू थिंक अबाउट दैट साउंड और मुझे बता सकते हैं कि वो साउंड क्या था? लेट मी रिमाइंड यू दैट. ओके, लुक एट द स्क्रीन. So we did a story and now I'm going to retell that story once again. So look at the screen. The story was, one day an ant went into the woods to find some food. The ant was very hungry. While walking, she found an apple fallen on the ground. And she said, "Oh my God, what a beautiful red juicy apple." She was very happy, but suddenly she heard a loud noise of chop, chop, chop. As she lifted her head, she saw a man cutting the apple tree with an axe. His arms go up and whoosh, he chopped the tree. The ant became really sad to see this. So she decided to stop this. But how? She saw an alligator in the lake and asked him to help. The alligator attacked the man and that man got so scared that he dropped his axe then and there and ran away. And after that, the ant and the alligator became really happy because they saved the apple tree. तो आपको याद आई हम लोगों ने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? Yes. We did the story of ant, and after that we also highlighted the objects जिनके same sound थे और जिसके हमने photos भी ढूंढी थी library corner से जाके. So let me show you those objects as well. Those objects were ant, alligator, axe and apple. So now I want you people as well to repeat it after me, but with the initial sound a. हम इसको repeat करेंगे. कैसे? जिस तरह मैं पढ़ने लगी हूँ. A ant, a alligator, a axe, and a apple. I hope that you all have already reminded कि हम लोगों ने कौन सा object पढ़े थे और उनका sound क्या था. ठीक है? We are done. Now moving on to the next lesson. We are done with the a. लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये a जो है ये है क्या? What is this a? How does it looks like? So I am going to show you the face of a. Be ready. First of all, it looks like this. Now look at the screen. आप लोगों ने करना क्या है? You need to take your index finger और हम इसको एक पॉइंट पे रखेंगे, लेकिन वो लाइन पे नहीं होगा. ओके, हम इसको पॉइंट पे रखेंगे और वी विल मेक अ कर्व्ड फेस और उसके बाद वी विल गो अप देयर एंड देन डाउन. ये बन जाएगा हमारे पास ए का फेस. ओके, नाउ व्हाट इज योर इंडेक्स फिंगर? ऑल ऑफ यू शो मी योर इंडेक्स फिंगर.
दिस इज योर इंडेक्स फिंगर. आपकी हैंड में जो फिंगर्स हैं, थंब के बाद जो फिंगर है, दिस इज योर index finger. Everyone show me your index finger, and now we are going to use it to trace it on a sand or salt tray. ठीक है? Okay. अब हमारे पास है salt tray. आप लोगों की टीचर आपके आगे salt tray रखेंगी. उतनी देर तक आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे. And remember, no one is going to create any mess. ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि आपके सामने जो ट्रे है, you need to take your index finger, and with the help of that index finger we are going to trace a. किस तरह का? जिस तरह के अभी मैंने आपको बताया था. Starting from the point, then make a curve shape, उसके बाद go up और फिर down. In this way we will get a shape of a. मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ, आपको शायद नजर आ जाए. Okay, so let's do it again. First of all, put the index finger here, make a curve shape, उसके बाद join that point again, then go down. This is the shape of A that we got. हमें ऐसी shape मिली. So pause the video here for a second, and now you are going to do it again. अच्छा जी, आप लोगों ने इसको करना है. Right now here we have an interesting poem. अच्छा, we have done the sound of A, we have done the objects with the sound of A, and we have also seen the face of A. Right now I'm going to tell you a poem. उस poem को हम practice करेंगे, लेकिन I want all of you to get up and enjoy that poem with me and look at the screen. So first of all, here it is. Ants on a picnic are not so great. Little ants are on my plate. Here are the ants. Let's do it one more time. It is, ants on a picnic are not so great. Little ants are on my plate. And here are the ants. Can you spot ants here on the plate? Yes. And these are the ants. So, can you spot the sound of A? I'm going to say it again. And when you spot the sound of A, आपने अपनी टीचर को hand raise करके बताना है. Ants on a picnic are not so great. Little ants are on my plate. We are done. So, as you can see that we use the sound of A. In the whole poem, I use the sound A very frequently. आप लोगों ने भी ये poem जो है इसको relearn करना है, दोबारा सुनना है और इसको enjoy भी करना है. Moving on, we have some few new words. इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि your teacher is also going to show you the flashcards of the object that I am going to show you on the screen. तो आप लोग पहले screen पर देखेंगे and after that your teacher is going to show you those flashcards और आप उनको देखकर बताएंगे कि okay, this is that object, इसका name ये है जो भी टीचर ने बताया था और इस कार्ड का name ये है. Okay, look at the screen and listen very carefully. Now you need to tell me what is this object. आप लोगों ने इसको देखा भी होगा. Okay? Yes, it's an aeroplane. Aeroplane. And what is this? ये हमने पढ़ी भी थी स्टोरी में. Yes, you're right. It's ant. Ant. And what is this? ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, but I want you to think about it first. Think about it that where have you seen this? आप लोगों को इस साइन से बहुत हेल्प मिलेगी. So look at it. हम इसको यूज करते हैं इन द हॉस्पिटल्स. हम पेशेंट्स को इसमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं. So this is ambulance. Now look at the screen back. It's ambulance. Say it again. Ambulance. Okay, and what is this? ये भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट. ये है अंडर वाटर, पानी के नीचे है
और हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? लेट्स सी. What is this? Here is a boat. The boat is just sailing here. लेकिन वो चलते चलते रुक गई है. क्यों रुकी है? Because of this. So this thing is an anchor. आपने देखा होगा रोड्स पे, जब हम रोड पे बाइक या गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक यूज करते हैं. लेकिन हाउ कैन वी स्टॉप अ बोट और अ शिप? सो वी कैन स्टॉप अ बोट और अ शिप बाय यूजिंग एंकर. नाउ से इट विद मी. एंकर. मूविंग ऑन, वी हैव दिस पिक्चर. ये भी हमने स्टोरी में पढ़ा था, जिसे एंट ने हेल्प ली थी टू सेव दैट एप्पल ट्री. यस, it is alligator. Alligator. And this is another animal. ये है ant eater. Ant eater. Ant eater eats the ants. This is the real picture of ant eater. He has a long nose, और अपनी long nose और यहीं पे इसका mouth होता है. इसकी help से ये ant खाता है. Okay? Now moving on. Okay. So we are done with all the objects. We are done with the activity. Now it's time for another activity. And for that activity, I want you to have these things that I'm going to show you on the screen. First of all, you need to have scissor, A4 paper of red color. अभी आपकी टीचर आपको दे देंगी. Then a glue stick and permanent marker. Now for a while, pause the video here. Your teacher is going to give you these things. उतनी देर में आप लोग अपनी चीजें इकट्ठी करें. And then I am going to show you how you need to make the activity. Okay, I hope आपकी टीचर ने आपको सब कुछ दे दिया. लेकिन what we are going to make and how we are going to do it? We are going to make the face of a like this. Okay? और उसके लिए मैंने अभी आपको दिखाया था that we need a glue stick, a marker, a scissor and A4 paper. Your teacher is going to provide you this, that is face of a. Okay? And another thing is the ants. What we are going to do is आप लोग white paper पे इसको glue stick की help से paste करेंगे. Pause the video here as you are going to paste this on the white paper और इसको जल्दी से कर लें ताकि हम एक साथ इसको finish करें. Okay? And remember, you are not going to create any mess in the class. Do it nicely. Apply glue on the back side of the letter and then I'm going to face this A. We are done. What is the next thing? You have these ants as well. Ants. I'm going to paste these ants on the A. You can do it with the help of your teacher as well. And do it very carefully. Okay. And remember, if your student, if your partner or your friend is having any difficulty in this, तो आप उसकी help भी करेंगे कि how to perform this. And I'm almost done with the pasting. And the final look is here. Okay, we are done with the pasting of A. We are done with the pasting of ants. What is left now? The leaves. I'm going to paste these leaves. And remember what we are making? We are making ants on A. So this is our last thing and I'm almost done. If you are not done, you can pause the video here और इसको complete कर सकते हैं, okay? So, ants on A, okay? Pause the video here if you have not completed it yet and then get back. अच्छा जी, I hope that you all are done with the thing, with the activity. और इसके बाद
I am going to wrap up the things. I hope that you all have made a beautiful app with the ants on it. I'm going to wrap up the things, but before that, I'm going to ask you as well that what we have done. हमने आज सारा दिन में क्या क्या किया? First of all, I asked you about the homework that you did at home. हमने क्या किया था? आप लोग, मैंने आपसे कहा था कि आप रिवाइज करके आए द साउंड ऑफ ए. हमने उसके ऑब्जेक्ट्स भी देखे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. आफ्टर दैट योर टीचर ऑल्सो शोन यू द ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर वो ए वाले ऑब्जेक्ट्स थे, आपने उनको उनके नाम भी बताए थे. देन वी ऑल्सो लर्न हाउ टू ट्रेस ए. फर्स्ट वी डिड इट ऑन अ सॉल्ट ट्रे. उसके बाद हमने एक्टिविटी की ऑफ लाइक दिस. वी डिड द एक्टिविटी. और अब मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगी अगर आपको कुछ भूल गया. So these were the things जिसके हमने names करे थे. First of all, we have this. Now you are going to tell me what is the name of it? Yes, aeroplane. And remember, you are going to say it like this. Aeroplane. And what is this here? Ambulance. And remember, what do we use for it? हम इसको हॉस्पिटल के लिए यूज करते हैं ताकि हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाएं. एंड व्हाट इज दिस हियर? आई टोल्ड यू अ स्टोरी. यस, इस तरह हम गाड़ी या बाइक के लिए ब्रेक यूज करते हैं उनको रोकने के लिए. सिमिलरली वी यूज दिस एंकर टू स्टॉप द बोट्स और द शिप्स. नेक्स्ट वी हैव दिस एनिमल. ये हमने स्टोरी में भी देखा था. Remember? And it's alligator. Alligator. And this animal's name is anteater. Anteater is the animal who eats ants. Here we have an ant and here we have an anteater. We are done with the objects and then, okay, we have the homework. What is your next homework? Previously you practiced the sound of a. उसके बाद आपने स्टोरी भी बताई थी खुद से, उसका आइडिया भी दिया था अपने मामा पापा को जाके. Now what you are going to do? You need to identify and find out the sound a. लेकिन कहाँ से? From the picture story. There will be a picture story in the description box. वहाँ पे वो स्टोरी मौजूद होगी. आपकी टीचर वो आपको स्टोरी देंगी. आपने स्टोरी को गौर से देखना है. उनमें से जितनी चीजें होंगी उनके नाम बताने हैं और फिर सोचना है कि इनमें से किन चीजों के नाम एस से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, इट्स ओके इफ यू डोंट नो, यू कैन ऑल्सो आस्क योर टीचर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर मामा बाबा, लेकिन यू हैव टू ट्राई फर्स्ट. So this is your homework. I'll be back in another lesson. लेकिन तब मैं आपसे दोबारा पूछूंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से साउंड थे और कौन कौन सी चीजें उस स्टोरी पिक्चर में से देखी. ठीक है? Take care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.